Good evening, you're watching To The Point. I'm Preeti Chaudhary. I'm going to take you now directly to Karnal. News breaking from there. The farmers, very angry farmers, about 1,000 over, marched to the mini secretariat. These were visuals that were witnessed just about a short while ago. I'm going to tell you the current situation right now. There was a mahapanchayat, viewers, that was taking place in Karnal at the Anaj Mandi. After that, the farmers en masse, the numbers varied for a few thousand, led by various farm union leaders, marched to the mini secretariat in Karnal, breaching barricades. The police at this point of time, their first line of defense, because the last barricade was also breached to the mini secretariat, used water cannons. However, what we are given to understand right now, that farmers have decided, about 300 to 400 of them entered the mini secretariat, and now they have decided that they will camp outside the mini secretariat in protest. Now, the sea of anger that you see on your television screen are of farmers who have marched to the mini secretariat after hours of a mahapanchayat. The main reason for this mega march is that after the Karnal incident, I'm going to hark your memories back to about 2 weeks ago, where farmers were protesting at a toll plaza in Karnal, and there the police had used brutal lathi-charge, and then a viral clip of the SDM on which he's on camera saying, "Break the heads of farmers who try and come through to the other side of that toll plaza." And clubbed with the brutal lathi-charge, the farmers demanded the sacking of the SDM and also murder charges to be pressed against him, because there was a death of a farmer on that day as well. The farmers had given these demands, also demands of compensation to the dead farmers, to the Haryana government. The Haryana government paid no heed to them, which has led to this march taking place today. The viewers in itself, I'm going to get you the latest. The farmers had violated Section 144, which was in place. The Haryana government had snapped the internet because of such a large gathering. Paramilitary forces have been put right now. But we're given to understand things have come down. It reached a boiling point. It had reached a head. And we did see farmers breaching the barricades. We also saw Rakesh Tikat on ground, various other farm leaders as well. But one thing, which is interesting is that this time around, even though the farmers have breached the barricade and entered the mini secretariat, this time around, the cops have not used baton charge, lathi charge, no lathi charge, because 2 weeks ago, the cops had come under heavy criticism for what we had witnessed at a toll plaza, where lots of farmers were bleeding with their heads, which had split. And they blamed, in fact, the SDM at that point of time, because his clip had gone viral saying, "Break the heads of the farmers." I want to get in a quick comment from my colleague Manjeet, who's been tracking right now the protest. Manjeet, very quickly, can you tell us what's the current situation on ground? Have things dialed down in terms of, is it calmer now? Well, Preeti, the police used water cannons to disperse the crowd, and after it was over, more than a dozen farmer union leaders, including Rakesh Tikat, Gurram Chuduni, Yogendra Yadav, besides others, have staged a protest outside the civil secretariat. Hundreds of farmers are still in and around the civil secretariat. A large number of them have started returning to their homes, but the situation is still tense near the civil secretariat, as hundreds of them managed to enter the civil secretariat. They removed the barricading. They were holding wooden sticks in their hands. No lathi charge, Manjeet, only the use of water cannons till now. Okay, we seem to have lost Manjeet Sehgal, but that's we're given to understand. This time around, there has been no use of lathi charge, but as Manjeet just said, that the farmers have now squatted outside the secretariat in protest. Now, this includes farm leaders like Rakesh Tikat, the other leaders coming in from Punjab. There's also Yogendra Yadav there as well. I want to cut across to our guest, because what we are seeing clearly seems to be a resurgence right now of the farm protest. We saw what happened 2 days ago. Thousands of farmers at a mahapanchayat in Muzaffarnagar. We are seeing similar scenes right now. Of course, this was a head-to-head confrontation with the cops in Karnal. But
it seems that the farm movement or the farm agitation after 9 months is once again peaking. I want to cut across to our guests. I have Brijesh Bhati, farm leader. I have Adil Singh Boparoy, spokesperson Congress, Anila Singh from the BJP. Brijesh जी, आप मुझे बताएंगे जो आपके सहयोगी करनाल में अभी मिनी सेक्रेटेरिएट के बाहर पहुंचे हुए हैं, बहुत सारे तो अंदर भी चले गए, इसका मतलब क्या है, फायदा क्या है और क्या चाहते हैं, अभी कब तक बैठेंगे वहां पर? प्रीति जी, हमारी जो आज था कि हम उन नेताओं हमारे जितने भी गए थे कि वार्ता करना चाह रहे थे कि जो उस एसडीएम ने उस दिन किसानों पर अटैक किया है, जिसकी वजह से एक किसान शहीद हो गया, एक किसान की आंखें चली गई। हमारे नेताओं ने बात की है कि भाई उनकी गिरफ्तारी हो, उस पर 302 का मुकदमा लगे और जो है उसका सस्पेंड किया जाए, लेकिन सरकार विफल रही और हमारे जितने नेता थे सबने पैदल मार्च करके लघु सचिवालय एक तरह चले गए हैं सब लोग और वहां पर धरने पे बैठ गए हैं। कब तक धरना देंगे वहां पर? जब तक उसकी गिरफ्तारी नहीं होगी एसडीएम की, जब तक वो जेल नहीं जाएगा। तो टिकैत साहब बाकी सारे फार्म लीडर वहीं बैठे रहेंगे तब तक? वहीं बैठे रहेंगे, सब पहुंच गए हैं, पुलिस की बैरिकेड तोड़ दी गई है और बैरिकेड तोड़ के सब अंदर बढ़ चुके हैं। सर ये तो अच्छी बात नहीं है, जैसे आप बड़े गर्व से बोल रहे हैं कि बैरिकेड तोड़ दी गई है, सब अंदर घुस गए हैं। क्या करें, जब एक किसान शहीद हो गया, उसकी शहादत हो गई, 750 किसान इससे पहले शहादत हो गई है, सरकार सुन भी नहीं रही है, बताइए क्या करें? हमारे साथ बने रहिए अभी तो। चलिए, I want to cut across right now to Anila Singh, spokesperson. Anila ji, we'll talk in Hindi if possible because we have a farm leader as well. Anila ji, why shouldn't the BJP government in Haryana at least listen to these farmers? Try and engage with them. Their grouse is that video viral. You also saw that clip, ma'am, of the STM. Now the farmers have taken this personally. They had one farmer who died in that protest. One farmer lost his eyesight. We saw the bloody visuals which took place there. They want action against the STM. He has been transferred out. And secondly, I have a question from Bhati Sahab. Bhati Sahab, ये जो डिमांड आपकी आप यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं संयुक्त किसान मोर्चा को, मैं आपसे केवल ये पूछना चाहती हूँ कि ठीक है, आप बोल रहे हैं कि आईएएस अधिकारी जिसने ये बोला कि एक पर्टिकुलर एरिया में अगर ये उस लाइन को क्रॉस करते हैं फार्मर्स तो उनको हिट किया जाए। अब मुझे बता दें, जहां पर इस अधिकारी ने ये कहा, क्या उसी स्थान पर वो सर फूटा था या उससे करीब 15-20 किलोमीटर की दूरी पे जहां पे ये इसकी तैनाती ही नहीं थी, जहां ये ड्यूटी नहीं थी इसकी? So I think this is absolutely undue demand, and farmers, they should put across their demands whether to remove those 3 farm laws or whether they have to talk about MSP. But if they will start dictating that what the administration has to do, right, I think that is not acceptable. Anila at ji, all. just stay with me. And what we have, Preeti, what we are observing in today's state, the behavior of the farmers, like they have gheraud the mini secretariat, and few of the farmers, they are inside the mini secretariat. What is this? All right, this stay is with anarchy. Stay, and stay if police administration uses force, stay with me. Adil Singh Boparoy, the Congress is constantly, madam, stay with me, please. Adil Singh Boparoy, the Congress constantly has pledged support to the farmers. Do you think you've done more harm to the farmers in the bargain? Because now the government in question reads it completely as a political campaign. Preeti, why is Narendra Modi treating the farmers like enemies of the state? And look at the brazen defense of this STM even by Anila ji. According to her, he hasn't done anything wrong. What kind of intellectual ignorance is the BJP demonstrating that the actual incident didn't happen there but happened 5 kilometers further down the road within a subdivision? The fact of the matter is there has been injustice which has been meted out to the farmers. One such farmer suffered injuries and consequently died. Several of them are languishing in the hospitals. Isn't it the responsibility of the government of the day to look after the farmers? Is the government not for the farmers, for the people of this country, or are they only to safeguard and promote the interests of the Adanis? But do tell me one thing, and as I go back to Mr. Bhati, I want to ask you one thing. For the Congress to hitch their wagon to the train of the farm protest, have you slowed it down? Because now the entire movement, if you call it, or the agitation is being looked as politically motivated. Maybe you should have stayed out of it. Let it be completely pure organic. Preeti, please understand the modus operandi of the BJP. Anybody who questions them or seeks accountability is politicized or is an anti-national. Tomorrow you put a question to them,
you'll be surprised, even you'll be labeled as an anti-national. But coming to the issue at hand, we are representatives of the people. We are amongst the farming community. We have to speak up for them. We will pick up cudgels for them. We cannot be hiding somewhere or in hibernation, not speaking up for them. Farmers are losing their lives. The entire agriculture sector is being attempted to be handed over to the Adanis and the Ambanis. I've said this ad nauseum. We are not willing to become slaves on our own lands. Okay. It's a question of our dignity. All right. And we will struggle till there is blood in our veins. All right. Okay. You know, I want to cut across right now to Mr. Bhati again. Bhati साहब देखिए ना, बात तो ये है जो SDM की आप बात कर रहे हैं उसका तो ट्रांसफर हो गया है. दूसरी बात अनिला जी ने बोला जहां पर उन्होंने भाषण दिया था वहां पर हादसा हुआ नहीं था. और तीसरी बात, वो तो बहुत सारे पूछेंगे, इसका मतलब ये हुआ क्या कि आप सेक्रेटेरिएट में, सचिवालय में घुस के आगे चीजें तोड़ें? अनिला जी बड़ी बहन है हमारी, ये तो कुछ भी कह सकती हैं कि कहां पर हादसा हुआ था, कहां पर नहीं हुआ था. लेकिन एक बात बताइए, वो वीडियोस आपने भी देखे हैं, मैंने भी देखे हैं, जिस तरह से वो एसडीएम कह रहा है कि भाई जो भी मेरे पास है उसका सर फूटा होना चाहिए. मुझे इस बात का जवाब दे दें अनिला जी कि इसको आदेश देने वाले कौन लोग हैं, कहां से इसको आदेश मिल रहा है कि भाई जो भी फार्मर्स मिले सबका सिर फोड़ दो, सबकी हत्या कर दो. वो परिवार का क्या होगा जिसका बेटा चला गया, जिसका पालन पोषण करने वाला चला गया, और उसका क्या होगा वो नौजवान लड़का था 19 साल का जिसकी आंखें चली गई हैं. आप मुझे जवाब दे दीजिए. एसडीएम के को बर्खास्तगी से, इसका ट्रांसफर से कोई इसका मसले का हल नहीं निकलता. जिस तरह से हमारे के नेताओं पर मुकदमे लगाए हैं, जिस तरह से उन पर रासुका तक की लगती है, क्या उस एसडीएम पर 302 का मुकदमा दर्ज नहीं होना चाहिए क्या हत्या का? जब उसने हत्या कराई है उसने ये कहा है कि लाठियां मारी हैं. आपने सामने देखा किस तरह से, जैसे इस देश में तालिबान का हुक्म चलता हो इस तरह से लाठियां मारी गई है. जिस तरह से तालिबान के कमांडर वहां पर हुक्म देते हैं, इस तरह से एसडीएम हुक्म दे रहा है कि जो भी मेरे पास है. क्या लोकतंत्र खत्म हो गया है? चलिए मुझे एक चीज बताइए. नहीं भाटी साहब देखिए, एक चीज बताइए, इसका मतलब हुआ कि आप मिनी सेक्रेटेरिएट में जबरन घुस जाएंगे, तोड़ा फोड़ी करेंगे? जबरन कोई नहीं घुस रहा है मैडम, जबरन कोई नहीं घुस रहा है. और शांतिपूर्वक हमने वार्ता की है, 3 बार वार्ता हुई है मंडी में, लेकिन वहां से वार्ता जो विफल रही है तो हम जो लघु सचिवालय की तरफ लोग बढ़े हैं और वहां पर हम जैसे धरना दे रहे हैं 10 महीने से, तो धरना देने का अधिकार सबको वहां पर देंगे हम. जब तक उसकी बर्खास्तगी नहीं होगी, जब तक उस पर 302 का मुकदमा दर्ज नहीं होगा, जब तक वहां बैठे रहेंगे हमारे. अनिला सिंह, many are also, you know, you say that the SDM is transferred. Many are also now looking at that transfer as a promotion, because from the SDM he's been put to the post of additional secretary. No, the people do not understand. That is why they are saying this thing, and I stick to my statement. But as what do I they not mentioned understand? earlier. Miss Singh, what is it that they don't See, understand? here I am not going to explain that which post is good, which post is bad, which is promotion, which is demotion. I think that is going to derail the debate. But I have to I have to ask Mr. Bhati. Mr. Bhati, you are saying कि 302 का मुकदमा उनके ऊपर, आयुष सिन्हा के ऊपर क्यों ना दर्ज कर दिया जाए? आप बिल्कुल 302 का मुकदमा आप दायर कर दीजिए, उसके बाद कोर्ट को तय करने दीजिए. जैसा मैंने शुरुआत में कहा कि क्या वहां पर सब टूटे थे जहां पर इसकी ड्यूटी थी. दूसरी बात ये है, मोबाक्रेसी से एवरीथिंग, जस्ट अ सेकंड प्लीज गिव मी 5 more seconds. मोबाक्रेसी से ये देश नहीं चलने वाला है. मौत कहीं पे भी घुस जाए. परसों जो है 5 तारीख को मुजफ्फरनगर में भी महापंचायत हुई, वहां पे बड़ी तादाद में हमारे किसान भाई और बहन पहुंचे. बेहद शांति से सब कुछ हुआ. किसान नेताओं ने अपनी अपनी बात कही, दुनिया भर का क्रिटिसाइजेशन हुआ सरकारों का, पर सब कुछ आराम से निपट गया. Why it didn't happen in Haryana? Okay, all right. क्या यहाँ Adil Singh Bopra wants to make a point. I'd like to go to him. Adil, you wanted to step in. चैलेंज करके सरकार को ही सब कुछ आप लोग सिद्ध कर देंगे. Anila Singh, yeah. अनिला जी, आपकी जानकारी के लिए सबसे पहले तो मुकदमा पुलिस दर्ज करता है और उसके बाद मुकदमा कोर्ट में जाता है. आप मुकदमा तो दर्ज करिए, बाकी तो बात की बातें हैं. नहीं एफआईआर आप दर्ज करवा दीजिए आदिल साहब. एफआईआर अगर हमारी सरकार होती अभी तक आयुष सक्सेना जुडिशियल कस्टडी में करनाल जेल में होता. अनिला जी, let madam Anila ji, one by one. Anila ji, one by one. Madam, please, one by one. No, I mean, मैं आपको बता, madam, come on. Extend the same courtesy. Extend the same courtesy that he extended you. Extend the same. Yes, go ahead, Adil. चलिए अनिला जी, मैं अगर कांग्रेस की सरकार होती हरियाणा में, अभी तक आयुष सिन्हा सस्पेंड होता और करनाल सेंट्रल जेल में होता. ये आपकी जानकारी के लिए पहली बात. दूसरी बात, प्रीति प्लीज अंडरस्टैंड,
Please see the arrogance and the brazenness of the BJP. They believe that they are above the law of the land. They are above the people of this land. This is a government which de facto and de jure exists to promote the interest of Adanis and Ambanis. They're not concerned. They're not concerned if people die. They're not concerned if people suffer injuries. They're not concerned if lakhs of farmers are expressing their grievances. They want to muzzle every voice which speaks up against now it's rhetoric. Anila ji, go ahead. You wanted to come back for a rebuttal. प्रीति मैं इनको बता देती हूँ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहाँ पे अडानी और अंबानी जैसे बड़े बड़े उद्योगपति जो हैं उनका भी ख्याल रखेगी, आपका भी ख्याल रखेगी, जो मजदूर उनकी फैक्ट्री में काम करते हैं उनका भी ख्याल रखेगी, मेरा भी ख्याल रखेगी, प्रीति जी का भी ख्याल रखेगी, पूरी साहब का भी ख्याल रखेगी। कोई भी सफल सरकार वो होती है जो उसके देश में रहने वाले हर नागरिक का ख्याल रखे। शायद आपकी सरकारें ये नहीं कर पाए, इसीलिए आप लोगों को दरवाजा दिखा दिया गया। You are not able to handle Punjab, you are not able to handle Rajasthan, you are not able to handle Chhattisgarh. So don't try to completely devastated every institution. Bhati ji, okay, I want to go. There's no point. Nobody can hear anyone. Brijesh Bhati ji, आप मुझे ये बताइए कि अभी आप कब तक बैठेंगे? और अनिला जी ने जो पॉइंट रेज किया, 2 दिन पहले आप मुजफ्फरनगर आए थे, वहां पर तो सब कुछ ठीक ठाक हो गया, खत्म हो गया। अब ये महापंचायत जो आपकी अनाज मंडी में हो रही थी, उसको सिविल सेक्रेटेरिएट, मिनी सेक्रेटेरिएट लाने की क्या जरूरत थी? प्रीति जी, हमारी 5 तारीख को महापंचायत थी मुजफ्फरनगर में, 20 लाख लोग आए, बड़े शांतिपूर्वक रहा। धन्यवाद करता हूँ अनिला जी ने आज बड़ी अच्छी बात कही है कि आपकी पंचायत शांतिपूर्वक रहेगी। मैं धन्यवाद करता हूँ बार बार। और जो है ये मैं हरियाणा की बता दूं आपको, हरियाणा के जो लोग हैं, ये मुख्यमंत्री है, ये चाहते हैं कि भैया दिल्ली का आंदोलन हरियाणा में शिफ्ट हो जाए। इनकी ये पॉलिसीज है, इसलिए किसान को यहाँ परेशान किया जा रहा है, इसलिए किसान पर यहाँ बार बार अटैक किया जाता है। ये चाहते हैं कि दिल्ली की सीमाओं को छोड़कर किसान पर अगर आप अनाज मंडी से निकलते ही नहीं तो क्यों अटैक होता? नहीं, मुझे बता दीजिए, जब वहां कोई बात बड़ी नहीं तो क्या करता किसान? कहीं ना कहीं। अच्छा, बस एक और आखिरी सवाल पूछूंगी भाटी जी। तो आप कह रहे हैं टिकैत जी, बाकी सारे फार्म यूनियन लीडर और बाकी सारे वहां पे जो किसान हैं वो मिनी सेक्रेटेरिएट के बाहर ही धरना देंगे जब तक उनकी मांगे नहीं मानी जाएंगी? धरना शुरू हो गया है प्रीति जी, और जब तक ये एसडीएम पे मुकदमा दर्ज नहीं होगा, जैसे बड़ी बहन हमारी समझदार हैं, बड़ी हैं, हमसे पढ़ी लिखी है, कि भाई 302 का मुकदमा हम तो एप्लीकेशन दे चुके हैं, पुलिस दर्ज करेगी और सरकार मानने को तैयार नहीं है। चलिए तो क्या भाटी जी, चलिए आपने कह दिया जो आपको कहना था, बहुत शुक्रिया। थैंक यू देयर, थैंक यू Adil Singh Bopurai for joining us as well as Anila Singh. We're going to take a quick break. We're going to back with the latest. But the moot point here now, what's really happened is things haven't really quite calmed down because all the farm leaders, along with some of the farmers, about 300 is what we are getting to understand, have squatted outside the mini secretariat and they're not moving till the time the Haryana government accepts their demands. A quick break. Up next, Rahul Kanwar.